Hmm. Uh, Hi, Man. Hi. Shani. Hello. Yeah, So today we will start whatever whatever we have left with in the statics class. yeah, See, yesterday we were discussing about types of variables, the types mm, of variables, quantitative variables, in which they are discrete and continuous, and the correct. one is qualitative or categorical variable. Discrete, as I told you, the one we have studied in the DSP or signal systems, Yeah, discrete signals or the continuous signals. The same thing is used here. yeah. We were at correct. We were at types of variables. Mhm. So see, by quantitative variables, I mean that the quantitative variables are those which can be numerically measured, and the data collected on a quantitative variable is called quantitative data. Yes, Okay, got and it. the quantitative variables, discrete variables are discrete variables those which can be countable. In other words, a discrete variable can assume only certain values with no intermediate values. Mm, You might have seen in the system when we suppose in the signals in DSP, when mm, we go for the suppose Laplace transform or sorry Laplace transform, I'm saying when we are plotting the signals in the discrete, when we are plotting any signal, suppose uh, impulse signal is there, we are and we are plotting at some
certain values are there. So when we are plotting a del t 0, del t minus 1, del t minus 2, whatever is the values. Or if we are plotting the step function, you might have seen that we are getting the discrete values, Correct. correct? Correct. Continuous are those which can assume any numerical value over a certain interval or intervals is called a continuous variable. Okay. Hmm. Or now qualitative or categorical variable. See, in this we have classified into two or more non-numerical categories. A variable cannot assume numerical value, but can be classified into two or more non-numerical categories. It's called a qualitative or categorical. The data collected on such variable is called a qualitative data. And there are some categorical variables are there when we are doing the analysis part. There are categorical variables are there. We have to do the analysis on. Okay. Now this is a flow chart. You can say variables called qualitative, quantitative, and qualitative. As you know, that qualitative is discrete and continuous, and qualitative categorical example making of computer opinions of people, gender, or comes under the qualitative part. Discrete is number of houses, cars, accidents. Continuous is length, age, height, weight, time. Okay. Got it. See, now there are two types of data: cross section and time series data. Okay. Cross section data is data where data collected on different elements on a different time for same period of time is called cross section data. Sorry, Aman, can we go back to slide 36 1 second? Flowchart, but Just 1 second. this you want to note it? Yeah, I was just like You can note. reading it, I misnoting it. Pardon? I was reading it, I'm Okay, misnoting okay, it. okay. Okay. Yeah. In this way, there are many examples for the same thing. We can take many examples for the same thing. Now, cross-section versus time series data. Cross-section data is data collected on different elements at same point in time or for the same period of time. It's called So cross-section. cross-sectional data is a part of qualitative data, is it? You can somewhat say. Qualitative data is a categorical data. Got it. Okay. This is a qualitative. This is a cross-section data that there are different companies and what is the sales in a given year for those companies. Got it. Okay. Qualitative is which cannot assume any numerical value. This is Okay. cross-section data. And now time series data collected on the same element for same variable at different points in time or for different periods of time. Means data collected on same element for same variable at different points in time or different periods of time. It's called time series data. For example, if we are taking healthcare fraud judgments, we are taking, or we can say we can take this credit card fraud which has happened in the years. We can take that data also. So this data this data clearly depicts the healthcare fraud judgments in various years. The same we can take for the credit card fraud, means what the fraud happens in the credit card in various years. It also comes under time series data. Okay. Okay. Got it. Now standard variance and standard deviation. See, standard variance, as we know, that is a measure of how far a set of numbers spread from their range value.
Correct? What is variance? Variance is how far the number means spread out from their average values. We can say that. Yeah. Yeah. And standard deviation is used to express the magnitude by which the group of members differ from the mean value for the group. One second. ठीक है वो बात बताऊंगा तेरे भाभी के लिए रोटी बनाएगी ठीक है हैं? हाँ ये रात के लोग तो बाप ठीक है ठीक है क्या अच्छा अच्छा Hello. Hello. Yeah, man. Yes. Shani, standard deviation, as we were discussing, is used to express the magnitude by which the members of the group differ from the mean value of the group for the group. It's used to express magnitude by which the members of the group differ from the other. हाँ, ठीक है. From mean value. What is the deviation like? Correct. Yeah, deviation. And various measure now. There's a standard value set for some variables, but there are deviations from that standard value. You can take it in this way. Okay. For example, you have set a criteria that certain parameters should fall in certain point, but those parameters deviate from that measured point. Okay. Okay. Hmm. For example, we can take the example. A teacher says to the students that you should your marks should come near about 85, but all the students secured below 85. Hmm. Okay. Hmm. Understood? Understood. Random sampling. The standard deviation is nothing but the square root of the variance, and the formula for the sample variance is x minus x bar whole square upon n minus 1, and sample standard deviation is under root of x x minus x bar whole square upon n minus 1. Okay. Okay. And as I told you, standard deviation square root is or standard variation. Fine.
You can gauge it from formula also. Now correlation. Correlation is nothing. It is used to measure the linear relationship between two quantitative variables. Okay. Or you can say correlation is a measure of strength of a relationship between two variables x and y. Okay. Shani? Getting? Hello? Hello, getting? Yeah. No, I'm saying it is what do you mean strength of linear relationship? Means it describes the relationship between the two variables, two quantitative variables. Strength by strength, I mean the relation can be positive, it can be positively correlated, it can be highly positively correlated, it can be means correlated, it can be negatively correlated, or there can be no correlation. Okay. Okay. The formula for this is x minus x bar upon y minus y1 y bar upon xi minus x bar upon y minus y. This is the mathematical formula, but in data science, you use different formula apart from this. This can also be used, but we generally use the using p-value part. Okay. Cool. See, types of correlation are there: positive correlation, negative correlation. Okay. Positive correlation is there in which the two variables are there and they move in tandem, means they move in the same direction. If there is change in one variable, the same change is not seen in the first one, in the other variable. A positive correlation suppose exists when one variable decreases as the other variable decreases, or one variable, or the one if one variable increases, the other variable also increases. And since they move in different directions, they are influenced by the same external forces. You can say this. Understood. Okay. Yeah. We can say that if we are moving, if you and I am moving in the same direction, we are positively correlated. And suppose if we can take example of the saving account. When the interest increases, our account balance increases. When the interest decreases, our means when the interest rate decreases, our the balance increases. When the interest rate decreases, there is a decrease in balance. Okay. Or we can take the example of share. When the share market price, when the share price rises, the our portfolio increases. When the share price falls, our portfolio decreases. Okay. Okay. Negative correlation means the variables move in the opposite direction. If two variables are negatively correlated, a decrease in one variable is associated with the increase in another variable. Okay. For example, if we have a portfolio and it contains shares and bonds. Okay. For example, there's an increase in our portfolio and share price increases by 12%, but the bond price increases by -2%. Okay. This can be taken as an example now. Understood? Yep. So you can take this example that our portfolio will increase. It means there will be increase in share prices, but there will decrease in bond price. Okay. Understood. Now this is the picture. This is the image depicting how the variables are correlated. See, perfect positive correlation is this. High positive correlation is this.
This is nothing but the correlation. It is showing the correlation, and correlation lies between 1 and -1. Understood. Okay. Okay. ये कोई क्वेश्चन हम कोरिलेशन से करेंगे क्या? कोरिलेशन से ये होगा, जैसे सपोज करो हमारा अभी डेटा देंगे हम लोग को, ठीक है, अभी हम लोग डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे जब, तो उसमें क्या होगा, अब सपोज करो कास्ट का हमने डेटा ले लिया, ठीक है, अब कास्ट का डेटा ले लिया, हमको ये देखना है कि इंजन के साइज बढ़ने से स्पीड में क्या वेरिएशन आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, कंपैरेबल जब करेंगे, कंपैरेबल जब करते हैं, हाँ, कंपेयर कंपेयर करेंगे, कंपेयर जब करते हैं ना, कंपेयर कंपेयर कर ठीक। पाएंगे कि दो दो चीज कैसे कोरिलेटेड है। या सपोज करो आपका जैसे आप फाइनेंस में हो, तो क्रेडिट कार्ड, ये जो क्रेडिट सिस्टम है, इसमें दो वेरिएबल्स को कैसे कोरिलेट करेंगे, इसमें मतलब एक के वेरिएशन से दूसरे के वेरिएशन में क्या असर आएगा। ठीक है भाई, आप वो सिबिल स्कोर होता है ना, अगर बंदा पेमेंट सही से करता है तो उसका सिबिल स्कोर हाई होगा, अगर बंदा पेमेंट सही से नहीं करेगा तो उसका सिबिल स्कोर लो होगा। वी कैन टेक इट एज कोरिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। अंडरस्टूड। ठीक है, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ये हो गया जब वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ठीक है, और हाई पॉजिटिव कोरिलेशन ये हो गया, और लो पॉजिटिव कोरिलेशन ये होगा, स्कैटरिंग होगी। नो कोरिलेशन आप देख सकते हो कहीं भी मीट नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं किसी तरीके से भी वेरिएबल्स कोरिलेटेड नहीं है। लो नेगेटिव कोरिलेशन ये हो गया, हाई नेगेटिव कोरिलेशन ये होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ये हो गया। ठीक है, अब देखो डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन लास्ट कंसेप्ट है हमारा। Dispersion is the extent to which the distribution is stretched or squeezed. गॉट इट, या। ठीक है, जैसे हमने 11th में ही पढ़ा था डिस्पर्जन के बारे में, ना क्लास मैथ्स में, स्टैट्स में, ये उससे पहले ही पढ़ा था। ठीक, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्ट्रेचिंग या स्क्वीजिंग होगी, वो हमारा इट कम्स अंडर डिस्पर्जन। अब वो it shows the distance of the values in the distribution from the central value. Okay. Okay. अब it is important for gauging volatility, quality, yield. अब कॉमन मेजर डिस्पर्जन क्या है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। करेक्ट। अब हम ये देखते हैं जब वेरिएंस ज्यादा होगा डेटा में, तो डेटा वाइडली स्कैटर्ड होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। डिस्पर्स तो स्कैटरिंग जब वेरिएंस ज्यादा होगा डेटा में, तो डेटा क्या होगा, वाइडली स्कैटर्ड होगा। सॉरी। जब वेरिएंस ज्यादा होगा, हाँ, डेटा वाइडली स्कैटर्ड होगा। हाँ, भाई जब दो हाँ, यस, वेरिएबल वेरी करेंगे तो स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। हाँ, अब डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। करेक्ट। अब डिस्पर्जन क्या करता है, इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ डेटा फॉर द स्पेसिफिक वेरिएबल। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। बता समझ में आ गया ना? यस। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा निकालते हैं। अब उसमें हम लोग पहले साइज पता करते हैं क्या है, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेट ऑफ डेटा फॉर द स्पेसिफिक। ठीक है, Understood. अब देखो Okay, this honestly, this has been like the easiest class that we've had till today. ये समझने वाली है, मतलब इसमें ज्यादातर जो कंसेप्ट है वो इजीली ग्रास्प करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है। इसमें जो डिस्पर्जन की चीजें होती हैं, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब देखो ये सेंट्रल वैल्यू है हमारी। ठीक है, अब ये आप देखो, ये
जो ग्राफ है क्लोजली क्लोजली डिस्पर्जन है इसमें। हम्म। अब इसमें वाइड डिस्पर्जन है, वेरिएबल सारे स्कैटर्ड है, करेक्ट। वेरिएंस ज्यादा है ना। हम्म। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ले लें। तो बढ़ेगी ना। हाँ, वही चीज है। हम्म। ठीक है, अंडरस्टूड, हाँ। सारी चीज समझ में आएगा, यहाँ चीज जितनी थी हाँ। यही सब था, देखो यही सब था पूरा। ये पहला पार्ट आपका स्टैटिक्स का खत्म हुआ। अब हम्म। कल मैं इंफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स शुरू करूंगा। ओके। इंफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ही प्रोबेबिलिटी आती है और पी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे। आप रिपीट कर सकते हैं अमन? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। हाइपोथेसिस हाँ। टेस्टिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद अपना ईडीए का थ्योरी लेक्चर, उसके बाद अपना ईडीए पे मूव ऑन करेंगे। जहां पे जो जो अभी थ्योरी बताई मैंने, हम्म। इसकी, उसके इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, उसके बाद आपका ईडीए की, वो सारी आपको उधर काम आएगी। सो अगले क्लास में हम डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, इन्फेरेंशियल हाइपोथेसिस, इन्फेरेंशियल इन्फ्रेंशियल। जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स टाइप्स, उसका हाँ। डिस्क्रिप्टिव में कुछ है नहीं, इन्फेरेंशियल में सारा चीज इन्फेरेंशियल का ही है। ठीक है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बाद आपने क्या बोला? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बाद आपका ईडीए, ईडीए। ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अंडरस्टूड। तो इतना सब चीजें समझ में आ गई। हाँ, एक बार मैं पढ़ लूंगी इसको अगली क्लास देखो, के लिए। मैं ज्यादा चेंजेस, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, मैं ज्यादा चेंजेस नहीं करता। मैं हाँ। ज्यादा दिमाग, आपके दिमाग से उतरने खेलूंगा कि मैं, कि आपको वो लगे। मेरा सिंपल शॉर्ट फंडा यही है कि मैं आपको जो जो कंसेप्ट है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मुंह निकल, मैंने आपको पहले ही बोला था, हम्म। वही मेरा तरीका है। नहीं, अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक है, हम्म। ये चीज आपको देखो ध्यान से समझ लिया आपने। इसीलिए मैंने कहा था इसमें जितना अटेंटिव रहोगे आगे के लिए फायदा है। या। ठीक है, अंडरस्टूड। तो या। ये हमारी क्लास आज की हो गई, इतना ही था। ओके। ठीक ठीक है। है, मैंने आपसे कहा था 1 घंटे के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं, थैंक यू, जल्दी हो गया। आधे घंटे में हो गया। या। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अभी मैं आपकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इससे पहले वाली क्लास की और आज की, और ये पीपीटी भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, डन। चलिए ठीक है, ओके, ऑल राइट अमन, थैंक यू सो मच। वेलकम।